student, welcome to my class. आज हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन रो एक्सेसिंग मेथड ऊपर सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़िया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहले कोन सीक्वेंस टर्म रो हमें प्रीवियस क्लास रे हमें जते बडे फाइल ऑर्गेनाइजेशन बुझिले सेते बडे मु टिके डिस्क्राइब करथे सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन विषय ना. कौन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मींस इन अ सीक्वेंशियल मैनर गोटे फाइल को ऑर्गेनाइज करा जिवो गोटे सीक्वेंशियल मैनर रे. दैट इज अ सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. It is one of the simplest method of file organization. Here records or data are stored one after the another in a sequential manner. A sequential access is that in which the records are accessed in some sequential manner. That is, the information in the file is processed in order, one record after the other. This access method is the most primitive one. The idea of the sequential access method is based on the tab model, which is the sequential access device. तो ये जो फाइल एक्सेसिंग मेथड रहला तो फाइल एक्सेसिंग मेथड या पूर्व हम डिस्कस करथिले प्रीवियस क्लास रे. वर्तमान आल्सो मु कहि देछि फाइल एक्सेसिंग को जिनसडे को जाउछि. When a file is used, information is read and accessed to computer's memory, and there are several ways to access this information into the file. So accessing method ऊपर हमें जानिले जे accessing method हम several way रे हमें गोटे फाइल को किबोली भाबरे access करूछे. That is your accessing method. Here is your sequential file accessing method. Sequential file accessing method रे कोन हला ना sequential manner रे फाइल गुडा को स्टोर करके रखा गला. After that हमें access कला गोटे sequentially access करले. तार गोटे एग्जांपल लेके हमें बुझिबा केमती sequential access ता होछि. Suppose this is your f1 is your file. Here r1 r2 R3, R4, R5. These are some data stored in a file. So here accessing method in sequential file organization, here R1, then R2 to R3, R3 to R4, R4 to R5 in a sequential manner. R1 परे हमें R2 को access कर पाइबा, R2 परे R3, R3 परे R4, R4 परे R5. हमें डायरेक्टली R5 डाटा को एक्सेस कर परिबा नै कि R3 डाटा को एक्सेस कर परिबा नहीं. काहे कि ना सीक्वेंशियल मैनर रे हमको आसे अबे पड़े वन आफ्टर अनदर. ओके, this concept is your sequential file accessing method. This description based on PGDCA. यार किसी की पॉइंट रहउची से की पॉइंट को वर्तमान हमें स्क्रीन रे नोट कर दोछे से सब गुडा को स्क्रीनशॉट मार के रखिबो. ओके, okay, these are some key point. Take a screenshot. Data is accessed or one record right after another record in an order. When we use read command, it move ahead pointer by one. That means हमें जब तक R1 फाइल को access करूँचे से R2 फाइल को pointer move करूँची. When we use write command, it will allocate memory and move the pointer to the end of the file. That means when we use write command in a file, it will move the pointer in the end of the file. That means file is closed. Next such method is responsible for tap memory जोटा कि अबे memory device रे हम आलोचना करथिले previous class रे. तो tap memory जो memory रहला से tap memory रे ए डाटा sequential method टा access होबा पई यूज हुए. So next is your random or direct or hard file organization or accessing method. Okay, let's start random file accessing method. Sometimes it is not necessary to process every record in a file. It is not necessary to process all the record in the order in which they are present in the memory. In all such cases, directly we use direct method or random file organization. This concept is based on such case. That means आमे जेतबेले एग्जांपल टारे बुझिले जे फाइल 1 रे 5टी डाटा अछि R1 R2 R3 R4 R5. आमे डायरेक्टली R5 को एक्सेस करे पे डायरेक्ट एक्सेस मेथड तोटे कोनदी ताको यूज करबा, नॉट सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. Got it? So now we will discuss the random file accessing methods definition. It is one type of file organization in which records are stored directly or randomly in a file on the disk.
records are stored randomly but accessed directly. Randomly stored record in a disk. That means हमर जतो randomly store है कि डाटा गुडा store है कि रहला गोटे डिस्क रे तो एक्सेस कला बळे हमें डायरेक्टली हमें नॉट सिक्वेंशियली नो एक्सेस करके डायरेक्टली हमें ताको एक्सेस कर पर रैंडम डाटा जो स्टोर है कि रहितो ताको हमें रैंडमली एक्सेस मते कर पर दैट इज रैंडम और direct or hash file organization concept. To access the file stored randomly, a record key is used to determine where the record is stored on the storage media. आम जो डाटा किंबा रेकॉर्ड को आम स्टोर करूँ कोटी स्टोर होची ना हम मेमोरी डिवाइस दैट इज योर डिस्क रे रहउची से डिस्क रे जो डाटा हम स्टोर हे कि रहउची रैंडमली ताको हमें डायरेक्टली वन बाय वन न करके डायरेक्टली हमें एक्सेस कर पाइबा. ओके तो रेकॉर्ड गुडा को टाइप ऑफ मेमोरी रे स्टोर हैला ना मैग्नेटिक डिस्क जोटा कहली मु एंड ऑप्टिकल मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क ए दुटा टाइप मेमोरी रे हमें एक ऑर्गन फाइल ए टाइप ऑफ फाइल एक्सेसिंग मेथड को यूज कर पाइबा. ओके द डिस्क इज द डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस which give us the reliability to random access of any file. In the file, there is a collection of physical block and the record of the block. The random access file is a term used to describe a file or set of file. There are accessed directly instead of requiring that order the file be read fast. Computer's hard drive accessed file directly where tap device commonly access file sequentially. Computer जो hard drive होची से hard drive टा हमरो directly access करूची आ tap device जोटा होची कि से sequentially access करूची. तो computer hard drive टा कोन टाइप रो ना random access file accessing method टाइप से access करे. Next point is here. Random access data file enables you to read or write information anywhere in the file, whereas the sequential access file you can only read and write information sequentially starting from the beginning of the file. It is the difference between these two types of file organization or file accessing method. आज रो क्लास रे हमें ए दुटा पॉइंट कवर करले. नेक्स्ट क्लास रे हमें आ दुटा पॉइंट जो रहला से दुटा कवर करिया. ओके आपण मनको जदी क्लास टी संपूर्ण भाबरे भल लागिला बुझी हला ताले कमेंट करंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एंड शेयर करिया पे जमार बोलियोनी. ओके थैंक यू.